बच्चालाई दुकान लिएर जानुभएछ। दुकानमा गइसकेपछि जति पनि सामान खरिदनु थियो माताले किन्नु भयो। छोरा हेरिराखेको छ, वहीं पर एक चकलेटको डिब्बा थियो दुकानमा और दुकानदारले भन्यो कि बाबु तिमीलाई के खानु छ, चकलेट आफ्नो हातले निकालेर खानुस्। पर त्यो बच्चाले निकाल्यो। धेरै बेर भइसक्यो। फेरि एक बार दुकानको दाइले भन्नुभयो निकाल्नुस्। बच्चा भन्यो ननिकाल्नु, केही पनि चाहिँदैन मलाई। बस हेरिराख्यो चकलेटको डिब्बामा पर खाएन, निकालेन। अब आमाले सामान किनिसकेपछि दुकानदारले आफ्नो हातले चकलेट निकाल्नु भयो और त्यो बच्चालाई दिनुभयो। बच्चा सानो थियो। दुकानदारको एक हातले निकालेको चकलेट त्यो बच्चाको दुई हात भरि। अब ती आमा और छोरा वापस आए। आमाले सोध्नुभयो छोरा तिमीले उहाँले जब भन्नुभयो कि अंकलले भन्नुभयो हजुरले निकाल्नु त किन ननिकालेको, यदि चाहिँदैन थियो भने उहाँले दिँदा किन लिएको। तब सानो बच्चा भन्नुहुन्छ कि देखो अगर म आफ्नो सानो हातले निकाल्थे तो इतना सा था, सानो हातले तो 2-4 वटा हुन्थ्यो। परन्तु दुकानको दाइले जब निकालेर दिनुभयो उहाँको एक हात ठुलो हातले दिनुभयो तो मेरो एक नहीं दुईटै हात भरियो। यानी हामी भगवानसँग माग्यौं भने हामी बच्चा समान हौं। हामी आफ्नो जति सामर्थ्य छ सब कुछ लगाएर माग्दा पनि हामीले धेरै माग्न सक्दैनौं। यदि भगवान आफ्नो मनले दिनुभयो भने भगवानले त्यति दिनुहुन्छ जति हामीले कल्पना पनि गरेको हुँदैन। प्यार से बोलना पड़ेगा। तो माग स्वयं से न किया जाए, क्योंकि भगवानलाई तो सब थाहा छ। हजुरलाई के चाहिनु छ के नचाहिनु छ सब भगवान जान्नुहुन्छ। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। हामी भित्र के राम्रो छ के नराम्रो छ, के चाहिनुहुन्छ के नचाहिनु छ सब भगवान जान्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानमा विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा रख्नुहोस्। भगवान बस हमसे इतना चाहते हैं कि तुम बस विश्वास करो, तुम्हारी बेड़ा पार हम करेंगे। प्यार से बोल दो ना जी, ए मेरी आमा बोल दो ना। तो कुन्ती मैयाले आज भगवानलाई के माग्नु भयो? दुख। भगवान भन्नुहुन्छ मैया हजुरको जीवनमा के दुखको कमी छ? बचपनबाट अहिलेसम्म दुख सकेको छैन अहिलेसम्म हजुरको जीवनमा। बचपनदेखि अहिलेसम्म केवल दुखै दुखमा हजुर हुनुहुन्छ। पर फिर भी जब जीवन में मांगने को मौका मिल्यो त्यो हजुर दुख माग्नुहुन्छ कि और माग्नुहोस्, सुख माग्नुहोस्। कुन्ती मैयाले एक बडो सुन्दर जवाब दिनुभयो, प्रभु दुख में सुमिरना सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का मैया भन्नुहुन्छ दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई। अगर कोई सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। बुझ्नु भयो कि भएन? ए आमा मतिर हेर्नु न, म यति पनि नराम्रो छैन, हजुर मुख मोड्नु भयो। राम्रो लागेन मलाई तो यता उता किन हेर्नु? प्यार से बोल्नु न। तो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो?
के अनुभव में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर कोई सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख को घड़ी में सब भगवान ला याद करनो छे, सुख को घड़ी में भगवान ला बिरसे छे। दुख पर्यो घर में कसई को स्वास्थ्य खराब भयो, कोई बीमार भयो तो हमेरू भगवान को याद करछो, हे भगवान अब तो ठीक कर देनो होस। हमरो परिवार में कसई को पनी बीमारी न होस, कसई लाई पनी बीमारी न होस, कसई को स्वास्थ्य खराब न होस। यदि ठुलो संकट आयो भने तो हामी भगवान लाई गएर भन्छौ, हे भगवान यदि हाम्रो यो काम भयो भने 1 किलो लड्डू चढाउँछु। भगवान भने लोभ लालच, दुनिया के लोग तो लोभ दोगे तो देखो जो व्यक्ति लोभी हुन्छ नि त्यो व्यक्तिलाई हजुरले अलिकति लोभ देखाउनु भए बस में पर्छ। लोभी व्यक्तिलाई बसमा गर्नु छ भने धन दिनुहोस्, लेकिन भगवानलाई बसमा गर्नु छ भने लोभ नदेखाउनुहोस्, मन दिनुहोस्। भगवानलाई गएर हामीहरू भन्छौँ 1 किलो लड्डू। हाँ गणेश जी अगर काम सिद्ध हुआ तो 1 किलो लड्डू लाऊंगा। और क्या भगवान 1 किलो लड्डू के लिए बैठे? भगवान इंतजार करना वैसे कब मेरो भक्त होला 1 किलो लड्डू ल्याउला म खाउँला भनेर। हामीहरू यति स्वार्थी छौं भगवानलाई पनि लालच दिन्छौं। कति भक्तहरू अयोध्या में जब श्री राम जी को भव्य मंदिर बने, धेरै भक्तों सुन चांदी हीरा को मुकुट भगवान ला अर्पण गर्नुभयो। हीरा को मुकुट, हीरा को हार अर्पण गर्नुभयो। तर भगवान लाई पाउनको लागि केवल हीरा को हार अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भगवान तो केवल शुद्ध पवित्र मनले प्रसन्न हुनुहुनेछ। केवल भगवान धन हेर्नु भएको भए सुदामाको घरमा गएर 4 मुट्ठी चावल खानुहुन्न थियो। सुदामाजीले लगेको चावल पनि कस्तो थियो? हाँ, टुकड़ा चावल, कनिका। त्यो चावललाई भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा। फटा हुआ टाला हुआ वस्त्र ले बांधेर सुदामाजीले 4 मुट्ठी चावल लई जानुभयो द्वारिकापुरी। पर द्वारिकाधीश यति दयालु, यति कृपालु, 4 मुट्ठी चावललाई भगवानले बडो प्रेमले खानुभयो, स्वाद लिएर खानुभयो। अर्थात भगवान केवल धनवान को घर में जानुहुन्न। यदि भगवानलाई प्रसन्न गर्नु छ भने मन सुंदर हुनुपर्छ। अगर भगवान केवल रूपले प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो भने कुब्जाको कथा सुन्नु भएको छ? 3 जग्गामा टेडी, 3 ठाउँमा शरीर 3 जग्गाबाट टेडिएको थियो। तर पनि भगवानले कुब्जा माथि कृपा गर्नु। भगवानले एक बार आवाज लगाउनु, ए सुन्दरी यता आओ। पर कुब्जा 3 जगहबाट टेडी कुब्जा जब गइन्, भगवानलाई चन्दन लगाइदिन्। भगवानले 3 जगहबाट टेडी कुब्जालाई पनि बिल्कुल सीधा बनाइदिनु भयो, वास्तवमा सुन्दरी बनाउनु भयो। यानी भगवान रूपबाट रिझ्नु हुँदैन। केवल भगवान जात मान्छेहरू भन्छन् पुराणमा जात पात को भेद हुन्छ कि हुँदैन? भगवानले के जात पात को भेद गर्नुहुन्छ? भगवानले जात हेर्ने भए सबरी माता भिल्ली जात को हुनुहुन्थ्यो। सबरी माता बड़ा सुंदर प्रसंग। जब भी हम राम कथा वाचन करते हैं ना, इस प्रसंग को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत भाव से कहते हैं। राम राम रटते रटते, ये कसको भाव थियो?
सबरी माता बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया राम राम रटते रटते। सबरी माता सुबह की शाम सम्मा दिन रात राम 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 भजन करना थियो रटनो थियो और बस एक भाव थियो सबरी सवारे लासता आएंगे राम जी सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। क्या सुंदर भाव थे। सबरी माता दिन रात जरा विचार करिएगा कसई को इंतजार में हमेरो हर दिन घर सफाई करना सक्षम भी सकते ना सक्षम कति दिन सम्मा जैसे मान लो मानने में कोई बुराई नहीं है ठीक है। जैसे मानो मैले बंदी मजदूर को घर आऊँ मान लो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लेने में पैसा खर्च नहीं होता। ये ना मान लीजिएगा कि सच में आए तो शायद खर्च हो जाए बुझलो है ना। हजूर को सभी को घरे ही हो एता कथा आस पास सब कोई परिवार संग बसनो छ। अब मान लो ये माने है ना हमारे गड़बड़ तो बोले ना मान लो मतलब मन में सोच लो माँ हजूर को घर आऊँ बोली बोलाउन तैयार हुनुहुन्छ। अच्छा को बोलाउन चाहनुहुन्छ आफूले गाडी लिएर आउनुहुन्छ। अब हामी बसेको घरमा पनि 2-4वटा गाडी छ। हाँ अब म हजुरको घरमा आउँछु हजुरले सफाई गर्नुभयो ठीक है म आइना मैले भन्दिए भोलि आउँछु फेरि सफाई गर्नुभयो फेरि पनि म आइना मैले भन्दिए म पर्सि आउँछु फेरि सफाई गर्नुभयो फेरि म आइना तो हजुरलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन? झूठ ना बोलिएगा। अब परसी को बोली ना क्यों बने परसी को परसी आए बने तो बस झाड़ू लेके तैयार रहोगे। हमलाई तो झुकाउने अब गाली पनि गर्नुहुन्छ होला हो अब कसैले यति धेरै झुकायो भने रिस उठ्छ उठ्दैन मसँग नउठ्ला पर अरूसँग त उठ्ला। तर मैसँग रिसाउनु भयो भने भोग्नै पर्छ। प्यार से बोलो ना थोड़ा जोर से बोलो ना जी मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना। सबरी माता ने केवल 1 वर्ष 2 वर्ष 1-2 दिन को तो बात छोड़ दो 1 वर्ष 2 वर्ष आइना हजारों वर्षसम्म माता सबरीले इंतजार गर्नु भयो। और दुनिया में सबसे कठिन कोई काम हो तो किसी को इंतजार करना। आज आउनु होला छैन भोलि आउनु होला छैन परसों आउनु होला छैन नर्सों आउनु होला छैन। भगवान राम जी आउनु भयो परंतु इंतजार गर्दा गर्दा हजारों वर्ष बित्यो माता सबरी वृद्ध हुनु भयो तब गएर भगवान आउनु भयो। यानी विश्वास यति थियो भगवानले सबरी को घर में गएर झूठो बैर खानु भयो। झूठो बैर माता सबरी को घर में गएर भगवानले खानु भयो।
यानी भगवान को नजर में जात पात को भेद छैन। भगवान कहिले हेर्नु न को ठुलो जातको हो को सानो जातको हो। भगवानलाई यदि सच्चा हृदयले प्रेम गर्नुभयो भने भगवान तो सबैको घरमा गएर जुठो बैर खानुभयो। यदि प्रेम भयो भने रामजी के हजुरको घरमा नआउनु होला, अवश्य आउनुहुनेछ, लेकिन केवल प्रेम करिए। हाम्रो जीवनमा दुःख आउनुको कारण मान्छेहरू भन्छन् जो अध्यात्मको लाइनमा जान्छ, जो धर्मको मार्गमा जान्छ, त्यसको जीवनमा धेरै कष्ट किन आउँछ, किन दुःख आउँछ? यो जीवनको परीक्षा हो। जब हामीहरूले धर्मको मार्गमा चल्दा चल्दै हिँड्दा हिँड्दै धेरै दुःख आएको छ, सङ्कट आएको छ, पर त्यो समयमा दुःख यसै कारणले आउँछ क्योंकि भगवान हाम्रो धैर्यको परीक्षा लिनुभएको छ। यो व्यक्ति कति धैर्यवान छ, यो व्यक्तिमा सहन शक्ति कति छ, और त्यो समय वास्तविक परीक्षाको घडी हो। त्यही भएर दुःख आयो भने नातिनु होला। और दुःख मात्र यस्तो चीज हो जुन समयमा हामीले भगवानलाई याद गर्न सकेका हुन्छौँ। दुःखको घडीमा भगवान याद आउनुहुन्छ, पर सुखको घडीमा भगवान याद आउनुहुन्न। हजुरको घरमा सब कुछ बढिया छ, सब सोचे जस्तो भएको छ, और हजुरहरू त्यो समयमा दोस्तहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, रिश्तेदारलाई बोलाउनुहुन्छ, घरमा पार्टी गर्नुहुन्छ, हो कि हैन? कतिपय व्यक्तिहरू त केवल सुख आयो भने तो पार्टी गर्नको लागि होटल जान्छन्, होटलमा गएर बोतल खोल्छन्, पर भगवानलाई बिर्सिन्छन्। यो बहुत ठुलो विडम्बना हो। हामी केवल दुःखमा भगवानलाई याद गर्छौँ, सुखमा भगवानलाई बिर्सिन्छौँ। यदि सुखको घडीमा पनि भगवान याद आउनुभयो भने जीवनमा दुःख नै आउँदैन थियो। ये दुःख केवल हमें ये याद कराने के लिए आउँछ कि भगवानलाई याद कर। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा जोर से बोलो ना। भगवानसँग बस एक वस्तु माग्नुहोस्, प्रभु आफ्नो कृपा हमेशा दिनुहोस्। म कहिले हजुरलाई नबिर्सो, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बस ये प्रार्थना गर्नुहोस्। एक बड़ा सुंदर भाव छ हिन्दीमा हामी गाउँ, हजुरहरू आनन्द लिनु होला है त।